Kate Sharma will be starring with Ashmeet Patel in the upcoming movie Rudar. It will be out on the OTT platform. The film talks about the stigma attached to the women who have issues with fertility and how the partners fall out of love with them. Kate then meets a person with who she finds a real connection and the journey moves on. Well, to know more, watch the interview here from the actors and director Vikrant Singta. सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज हम लोग ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे और इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग मूवी तो सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला इनफैक्ट एवरी वन मैनी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स टोल्ड मी दैट सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया है सो वी आर वेटिंग फॉर इट सैटरडे को रिलीज़ है सो लेट्स सी जो भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं प्लीज़ जल्दी केट जी को कॉल करो क्योंकि इनके डेट्स मिलने वाले नहीं इन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है इस फिल्म के अंदर विक्रांत नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात की है कि नहीं फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस एंड गुड जॉब टू विक्रांत ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म लिखी भी आपने नहीं लिखी नहीं है चलो एक चीज़ तो किसी और ने की है इस फिल्म के अंदर एक्टिंग थोड़ी बहुत केट और मैंने की है The response has been great. Teaser has been loved by everyone. हमने अपने Insta handles पे आज सुबह ही डाला है, and there's been a good response. So we're looking forward to the release. परसों Saturday को 3rd of April it's releasing. So. जैसे कि मैंने कहा, ढेर सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं केट सब मिलना चाह रहे हैं क्योंकि शी लुक्स ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स लेकिन एक्चुअली इवन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड आई वाजंट श्योर क्योंकि मैंने सिर्फ इनका थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे देखा था आई हैडंट सीन एनी ऑफ हर वर्क एंड आई वाजंट श्योर कि एक्टिंग कैसे कर पाएंगी या नहीं बट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट इनफैक्ट मेरा एक शॉट था क्लाइमैक्स की तरफ जब हम बढ़ रहे थे एक शॉट था जिसमें मुझे ब्रेक डाउन होना है एंड इट वाज हर बैक टू कैमरा एंड मेरे डायलॉग से मेरा क्लोज अप था एंड शी एक्चुअली क्राइड इन दैट शॉट एज वेल आई रियलाइज दैट शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट शी गेव मी द राइट क्यू शी वाज इन द मूड एंड शी हेल्प मी विद माई परफॉर्मेंस सो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी गुड आर्टिस्ट सो मच इतनी तारीफ ओ गॉड सुन रहे हो सब call her number is लोग डीएम करो इंस्टा पे ओके आई थिंक ही इज़ अ मोस्ट स्वीटेस्ट गाय मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है इतना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा इनके साथ काम कर कर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि आई एम शूटिंग विद समवन हु इज़ अ स्टार मतलब वो टेंट्रम्स एटीट्यूड बिल्कुल नहीं एकदम हंसी मजाक करते हो हमारी शूट कैसे ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला इज़ वेरी स्वीटेस्ट गाय एंड वेरी गुड एक्टर सुबह के 4 बजे खत्म नहीं बट वी वर इंजॉइंग यार वी वर इंजॉइंग See, first of all, it was more about the story. The story was good, and then like Bolly Fame, it's a new platform which is coming up. So all thanks to them, they liked the story, and like I had a long-term relationship with Polyfame, so they came up with this. So it's not just an application, like this is an application where you would see these web films देख सकते हैं आप वहाँ पे music videos देख सकते हैं plus there would be a Bollywood reporter stand-up comedy acts और बच्चों के लिए भी like there are like short films there are films out there eventually like in few months it will come up and the best part is like it's not a paid thing the revenue is generated from the ads so audience can just go there, download it. It's there on Apple Store. It's there on Google Play Store. तो उसे आप download कीजिए and we are releasing a film on 3rd April. And it was wonderful experience. Like as Kate said, like Ashmit Bhai was like really. I never felt like that I'm working with a star. And of course, like Kate was also there. Like as a first time director, like it was amazing experience to work with them. Yeah. They were very supporting. Like
Uh, Ideally, like, he should, charge me Should I like tell that 1.5 hour shift, like, after that, but they were kind enough. for the extra shift, हाँ guys. तो अश्विन भाई को भी नहीं पे किया है. हाँ मुझे भी नहीं किया. हाँ. Yeah, He said so कि you अगली can मूवी दे दूंगा. yeah, अगली yeah. मूवी में So- काम कहाँ है करूंगा. वो अगली मूवी? कहाँ है? आ रही है आ रही है. No, we are like seriously working on, and I would love to work with both of them, like in my future projects as well. There are a few things in pipeline which eventually we'll get to know. We'll be working on them. But yeah, like it's a sweet baby, and I hope like audience को भी उतना ही पसंद आए जितने like प्यार से हम लोगों ने ये film बनाई है. So yeah. We would like to know more about the film. क्या कुछ दिखने वाला है? What is the USP about this? I think the USP of any film should and is the story, and I think this film it's a very emotional film. Plus, at the end, there is a very interesting twist. Something to do with the paranormal. I wasn't sure if I should say it, लेकिन थोड़ा सा वो paranormal element है इसमें. उससे ज़्यादा क्या बताएं? I mean, ये 20-25 मिनट की फिल्म है. It's a short film. तो अगर इससे ज़्यादा कहूँगा तो फिर पूरी कहानी बता दूँगा, better है. एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि आपने जिक्र किया था कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है. हाँ. इसके बारे में बताइए. So basically, like हाँ. If you open your room, please noise at the bottom. थोड़ा स्लो रख दो. हाँ, स्लो is fine. So, done? Huh. Basically, as Ashmit said, that it's an emotional film, heart-touching film, and मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेसिकली लड़की की कहानी है जिसको प्यार चाहिए ज़िंदगी में. शी वांटेड टू बी लव्ड, बट उसके हस्बैंड उसको प्यार नहीं करते, एंड देन शी मेट अ गाय एंड अश्मित. सो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, एंड बेसिकली उस लड़की के साथ लास्ट में क्या होता है वही ट्विस्ट है. सो या दैट्स इट. Okay, we have seen you in many TV serials. How was your experience working in an OTT platform? It's amazing यार. Working on any platform is best because I'm an actor. बड़ा हो छोटा हो platform matter नहीं करता, but हाँ story और subject matter करता है. So that's all. Yeah. और co-stars. Co-stars of course. Director भी थोड़ा. Story सब बता ही देती है यार. What was your opinion about OTT platform? आप लोगों ने काम किया है, आपने काफी सारे OTT platform में काम किया है. What's your opinion about it? Because पहले सिनेमा को काफी boom up किया गया था, अब OTT चालू किया है. लॉकडाउन के बाद तो काफी कुछ OTT पे ही लोग देखना चाहते हैं. So what's your opinion about it? I think it's great, you know, watching film at home, series at home. It's comfortable, and OTT or कोई भी platform हो यार, actor तो actor ही होता है. See, for me, I've primarily done only films. I've done one TV show, and that too, it was with film actors, and it was short. It was a start to finish finite fiction show था. हमें पता था कि कहानी क्या है, the graph of the characters, everything, and the locations, everything were decided in advance. तो जैसे कि हम लोग film shoot करते हैं, वैसे ही हम लोग web shows shoot करते हैं, because it's location wise, we have a story. Television में अलग किस्म की shooting होती है, क्योंकि वो infinite fiction जो होता है, it goes on for months and months and years. कहानी यहाँ से वहाँ चली जाती है, depending on कि TRPs कैसे हैं, किस character के favorable TRPs आ रहे हैं. So there is no set graph for your character, but in a web show, you know the story, you're shooting it like a film, and of course it depends on the scale of the show that you're doing, but usually the budgets are round about the same as the films. Of course, I've done some big films where you can't compare, but because there's high action, high octane action, things like that. But by and large, जो shooting experience है, the तरीका है is completely the same between films and web shows. So I completely am comfortable and I enjoy the experience thoroughly. Okay, Ashwin, you know, you're an inspiration for all the fans.
Fortunately, I've gone through my phase before social media, where I had all my controversies happening back then. So I don't get that much trolling nowadays. Maybe in a few months I'll get someone saying some stupid comment or something, but I don't really bother because I think that person has no other way of venting their frustration, so they do it on social media, and I should feel compassion for that person. Na ki unko, jawab dena and make him feel worse, get him angry, get him aggressive. It doesn't really help. So I'm indifferent to it now. It doesn't really matter to me. I rather just focus on the positive and inspire people. So if you look at my Instagram, it's all about inspiring people with fitness, my lifestyle. I just put out everything that I do every day. My videos, my stories are my life. I don't like to filter anything. My family is on there. Of course, a few personal things I won't share, but by and large, I share everything because I want people to know who the real me is, how I live, what I eat, what I do. I don't focus too much on the negative. Sometimes I will, say things which are not working for me, or if I'm not feeling too good. But I try not to. I try to always uplift people because I don't feel down that much. Of course, I have days which I'm down and out, but I go in for a workout and I'm fine. So that has been my journey. It's been, of course, there's been ups and downs with, like, as everyone's journey is, and I just feel like you need to be patient, you need to be perseverant, you need to just be positive, and you should have passion for what you do. So that's 4 P's right there. Along with me, Mr. Patel, that's 5 P's. That's a 5 P philosophy. अपने एक्टर की कोई सीक्रेट आप शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान कुछ Uh, See, we had a very little time, like because हम लोगों को काफ़ी shoot करना था, so we were not able to get that much of a time where we could know each other personally. But like whatever time we spent together, like I find him very down to earth person, like who doesn't have any tantrum and who's more concerned about what the story is, whether it's working, whether it's not working, and which was a very good, like as a first time director, feedback, if for the first time आपको ऐसे like actors मिलें, who are very helpful, who know and who are there as a support system. So I don't think I could have asked for better cast than Ashmit Bhai and Kate. Yeah. So yeah, it was a wonderful experience. Yeah. But any memories you want to share with all the fans जो आपके जहन में हमेशा रहने वाली है जब भी नाम आएगा रुद्धार Skate. एज ही सेड हम लोग ने सिर्फ 2 दिन इसको शूट करने में लगाया, एंड देन 2 दिन में आप कर ही क्या सकते हो, 2 भी नहीं, 1.5 दिन. सो नथिंग वाज दैट. हम लोग शूट में बिजी थे, हम लोग काम में बिजी थे, बट हाँ वी वर हैविंग फन टुगेदर. हम लोग मस्ती कर रहे थे, मैं रेड बुल पी रही थी, ये ग्रीन टी पी रहे थे. बस टाइम ही नहीं मिला यार, टाइम ही नहीं. आई होप हम कर पाते, बट टाइम ही नहीं मिला. Next time. We या have lot नेक्स्ट of टाइम days. पक्का. आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू प्लीज़ वॉच रूदार. हम लोग ने बहुत दिल से बनाई है, और इन्होंने बहुत मेहनत की है. हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और अश्मित तो वेरी स्वीटेस्ट गाय, वेरी गुड एक्टर. और मेरी भी तारीफ थोड़ी बहुत सुनी ली है आप लोगों ने. At least download the app. हाँ, Like, download it's the app. Available Google Play Store पे भी है और Apple पे भी है. It's free, like you don't have to pay anything. आप download करो, and not just our film, like there would be a lot of content that you can see on that app as well. So eventually, yeah. So it's a win-win situation, for everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much.